Hello friends, this is Chartered Accountant Omkar Gadge. My dear friends, this is the video of Introduction to GST. GST अब लगभग सभी एग्जाम्स में जाते CA, CS and ICW एग्जाम्स में applicable हो चुका है and by the course to come in 2018 onwards it will be a full-fledged thing. So far as November 2017 CA final exam is concerned, 10 marks के लिए GST है. December 2017 has been a surprise attempt for the students of CS professional because GST has been introduced as a part of syllabus and that too on a full-time basis. So now in the times to come it is for sure that GST तो आने ही वाला था, आ चुका है and अभी तुम्हारे पढ़ाई में that is curriculum में भी it is going to become a part of it and that is the reason why we need to be really geared for it. This video will be a bit रेस्ट्रिक्टिवली टेक्निकल एज इन मैं बहुत ज़्यादा डेफिनेशन के टेक्स्ट में अभी नहीं जाऊंगा. मैं जीएसटी का ओवरऑल आइडिया आपको क्या क्या है ये पूरा अभी एक्सप्लेन करूंगा. बट द थिंग इज दैट वेर एवर डेफिनेशंस कम इन टू प्ले देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो अपलोडेड. फॉर दैट मैटर यू विल बी जस्ट वेटिंग फॉर अनदर मे बी अ वीक और सो. फिर उसके बाद हम लोग टेक्निकली डेफिनेशंस के साथ विद द टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू विल बी टेकिंग द वीडियो. सो फॉर एज दिस वीडियो इज कंसर्न इट विल बी अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जीएसटी एंड द कंसेप्ट. So friends, goods and service tax, what it is? It is an integration of the existing indirect tax system which was there in our country. Now I should not actually say existing because अभी वो time भी बीत चुका है कि जब हम लोग उसको existing and GST ऐसा बोल सकते थे. Now how indirect taxes were actually existing earlier? So you had a taxation in indirect taxation system coming in from 1994. I mean 1944, beg your pardon. In 1944 there was a duty levied on the manufacture of goods, that was the central excise. Thereafter in 1956 came up the Central Sales Tax Act, which was a tax on the sale of goods in the course of interstate sales. Then in the year 1962 you had Customs Act coming into picture on the imports and exports. In 1994 we had service tax introduced by way of amending the Finance Act, and in 2001 around in 2002 we had the value added tax, that is the state sales tax coming into picture. The indirect taxes has seen a huge coverage over a period of time, and there, under its ambit there were many activities which were charged to tax. The reason being that it was always expected that the taxation flows जितना contribution direct taxes देता है उससे ज़्यादा contribution indirect taxes से भी आएगा, because considering the huge scope of activities which was covered. Now whenever we talk about taxation, for any tax to get levied or attracted, what is important is there has to happen a taxable event. Taxable event नहीं होगा तो tax attract नहीं होगा. This is a very standard principle you take whether direct taxes or indirect taxes. So when I talk about income tax, the activity of earning income is the one which triggers the income tax. So standard मतलब income tax is levied on person and all, that is all you learn in the generic books. मतलब ये TY BCom के book तक सीखने के लिए limited है. बट मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा कि when there is an income tax going to get attracted, so in first thing that there has to be a person who is earning income earn करने इसका मतलब there is a taxable event taking place and इसके वजह से the tax gets attracted on them. Now moving on to the indirect taxes. Earlier the taxable events on which the various taxes and duties were levied was on the activity of manufacture of goods you had Central Excise Act. On the activity of sale of goods you had the Central Sales Tax or the value added tax. On the activity of imports and exports of goods you had the customs duty, which is still going to continue even after GST. So customs as such has remained outside the purview of GST. Foreign trade policy is also outside the purview of GST, as in GST will not cover foreign trade policy. Foreign trade policy will continue to be governed by the Ministry of Commerce and under the Foreign Trade Policy 2015 to 20. So that will continue as a separate aspect altogether. Customs Act 1962, Customs Tariff Act and all the allied anti-dumping duties and all existing will be there even after the GST regime. So that has got no change, that has undergone no change. Yes, there has been some structural changes so as to the calculation of custom duties. Wherever you had the countervailing duties, which has now been replaced by the IGSTs. The next thing, in indirect taxes, when I go in sequence, when I was talking about service tax, which was the massive tax which was coming into picture. So when I speak about service tax, the activity which was taxable was rendering of service or provision of service. It all started with 3 services in the year 1994. It went up to 120 services around in 2012,
and thereafter, as you know, that negative list came into picture and the entire service tax structure changed, and you had a massive expansion of service tax regime in that case. Now later thereon you had a VAT, that is the state VAT, which was coming into picture, that is the sales tax on the domestic sales. Within the state sale, whatever used to take place, we had the sales tax come into picture. What is subsumed? By and large, there have been a major subsumption of tax when under we talk about the GST regime. The subsuming of taxes of broadly excise, service tax, VAT, that is VAT, state sales tax, and the central sales tax. These are the major taxes which have subsumed under GST. You have smaller internal domestic level tax, I mean the state level, or you can say the city level taxes like octroys, which are also again subsumed under the GST regime. So LBT, you had something called as local body tax, and all now will not exist any further. You will only have the goods and service tax. So what is this goods and service tax going to be about? So goods and service tax will be a tax levied on supply of goods or services which in the course of furtherance of business and for a consideration. Now supply is a broader term as regards to sale or as regards to provision of service. The definition of supply is inclusive. It means to say that supply means and includes any form of supply of goods or services by way of sale, exchange, transfer, license, rental, lease, barter or disposal. And it is a inclusive definition. So maybe in the times to come you may have certain other activities also getting covered under its scope. So supply, when I say supply by way of supply of goods by way of sale. So when one person is going to sell the goods, so when you say sale means what? There is a transfer of property in the goods from the seller to the buyer, and that is what triggers the tax. So that is what is going to be called as supply by way of sale. Exchange. Now see what exchange means. When I am going to say that I have exchanged goods for goods, not really barter actually comes into picture immediately, because how are we going to bifurcate between exchange and barter? Let us understand. Let's say you have a mobile phone which is today having a fair market value of only 5,000 rupees. So maybe you have bought it earlier and now its fair market value as on date is 5,000 rupees. You go to a mobile shop, you hand over that mobile phone to the shopkeeper and say that you want a new phone which is worth rupees 20,000, and against that you are going to give the consideration by way of giving this mobile worth rupees 5,000 and 15,000 rupees in cash. In this case, there would be an exchange because there has been an exchange of commodities but not of an equal value at the time of its exchange. Now when I look at barter, what happens about barter as a transaction? When you are exchanging goods or services of equal value, that is how it was actually taking place in the earlier days. Barter means goods for goods, services for services, but something which has a equal value. That is when we are going to say there is a barter actually coming into picture. So even though there is a barter or even though there is an exchange, this supply concept is going to be covering it, and that is the reason why goods and service tax is going to be attracted. So friends, what is important to understand is all about this supply. So like I told you about a couple of things like exchange and barter. Like you have a licensing, rental. So you have the renting of assets, you have renting of immovable properties other than the residential ones. You have renting of goods. Let's say now you hire out the cars, you have the Zoom cars and all coming to picture, where you are renting out the vehicles, or you are renting out machineries, you are leasing out the any kind of, let's say, assets for the matter. Every kind of such activity and transaction will be covered under the category of this renting, leasing and licensing. Disposal of assets. So disposal of assets means when you are actually going to give away certain assets from your books of accounts by way of disposing them, even that is going to amount to a supply. So see, what has happened is that because this supply concept has come into picture, the scope as such has tremendously increased or widened than it was there under the existing law. Yes, of course, there has been a change. Now there will be nothing regarded as manufacture being a taxable event. No, there will be no manufacture as a taxable event. But when finally the goods are going to be ready, they are going to be sold, that time we are going to say that yes, there is a taxable event called as supply which is actually taking place. Now supply of what? So supply may be of goods or supply may be of services. So that obviously depends upon the transaction that you are actually undertaking. For a consideration, yes, that is necessary, that there has to be some consideration, quid pro quo, like you have to understand in the Contract Act, something in return. So it may be in monetary form or non-monetary form. If it is in a monetary form, you obviously know the value.
If it is in a non-monetary form, then the value has to be determined, because it will not be so that since something has come in a non-monetary form, I will not consider any value for it. That is not something which will be allowed. So I'll have to obviously determine the value of that consideration. So जहां तक हम लोग उसको आगे बढ़ा के जाते हैं कि एक चीज हमारे पास अभी तक जो समझ में आई है कि ये जीएसटी क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज लेविड ऑन द एक्टिविटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. नाउ प्लीज रिमेंबर, आई हैव ऑलवेज said this one thing in my previous lectures on YouTube as well, that taxes are always, indirect taxes खास करके, they are always levied on the events, taxable events or the activities. Never say that taxes are levied on goods and services. The value of goods and services are only the instrumental things which are used for calculating the tax and collecting the tax. I will always say when there is a transaction, when there is an activity, that is the point when tax actually gets triggered or attracted. If it is about a sale of goods, then sale is the thing which attracted the tax, not the goods. Now value of goods becomes instrumental to me or important to me when I am going to determine the tax upon that, because I will take the value of goods as a base, I will take the rate allocated for that goods as a base, and then I am going to determine the tax associated with. ना दोस्तों, ये बेसिक जीएसटी का जो कंसेप्ट है, तो ये इतना ही है कि हम लोग को जीएसटी के वजह से क्या ज्यादा हासिल करना था इंडायरेक्ट टैक्सेस सिस्टम में. You had a taxation system earlier also when you had SENVAT credit rules, you had input VAT credit rules, but obviously there were certain restrictions. कहीं ना कहीं पे कैस्केडिंग इफेक्ट स्टिल एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता था अपने सिस्टम में, जिसको काफी हद तक कम करने की कोशिश जीएसटी में हो चुकी है. What you call as seamless credit. Seamless credit means there should not be any boundaries for the credits flowing from one state to another state to another third state or union territories, whatever it may come in its way. Earlier, what used to happen, if you remember, CST में ऐसा था कि अगर मैंने दूसरे स्टेट से गुड्स खरीदे, if there was a interstate purchase of goods, then I was not allowed to take the credit of the input CST or the input sales tax paid. I had to absorb it as a cost that used to become a dead cost for my business. Why so? Because the logic was very clear. Sales tax के केस में, sales tax was a tax which was based on the principle of origin base. So from where the sale was executed, that state was the one which was going to get the tax. And अगर जैसे गुजरात से पहले गुड्स अगर महाराष्ट्र में सेल हो रहे थे, तो the Gujarat state government was going to collect and retain that tax, and that is the reason why its revenue never flew into Maharashtra. Its credit was never allowed to the buyer in Maharashtra. To change the perspective to a certain extent, what has happened in GST also, the concept of input tax credits has been very much vividly brought in, and with a very wide scope as regards to the existing taxation scenario. अभी पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि एक तो हम लोग को एक स्टेट का क्रेडिट दूसरे स्टेट के दूसरे स्टेट्स के केस में यूज कर पाएंगे. ऑफ कोर्स देयर आर सेपरेट मैकेनिज्म फॉर दैट. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ इट वर्क्स. एक मेजर चेंज जो जीएसटी में हुआ है, दैट देयर इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स पिक्चर दैट इज गोइंग टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू नाउ, where the consumption or goods or services takes place, that is the state which is now going to get the revenue, and fair share of the revenue will be given to the central government as well. If you remember, जैसे मैंने आपको 2 मिनट पहले एग्जांपल दिया कि सेल्स टैक्स में क्या होता था कि अगर गुजरात से गुड्स महाराष्ट्र में बेचे जाते, even though there was a CST levied, the tax was collected by the state from which the sale was executed, that is Gujarat state government उस टैक्स के पैसे को रिटेन करता था अपने पास. अभी ऐसा होगा कि गुड्स का कंजम्पशन जिस स्टेट में हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र में अगर गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है, तो इन गुड्स के ऊपर का जो टैक्स है वो महाराष्ट्र में ही मिलेगा, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा. दैट इज हाउ द पर्सपेक्टिव अबाउट टैक्सेस. सो दिस कंजम्पशन बेस्ड टैक्स इज वन ऑफ द वेरी हाईलाइटिंग पॉइंट्स अंडर जीएसटी. प्लीज रिमेंबर that where there is a consumption, wherever there is a destination place of these goods which are supplied, or the consumption of services, that is the point we have to keep in mind. Now कुछ नए concepts क्या आए हैं? See, there is going to be some modifications of the existing concepts. Like if you know, there was place of provision of services rules under the service tax. Now you have a concept called as place of supply. Place of supply may be place of supply of goods or place of supply of services. So in order to determine this place of supply and all, when am I going to need this? First of all, let us understand. अभी तक हम लोग ने समझ गया कि आप लोगों को समझ गया कि supply as a concept है. Fair. Now let us say
आपने इतने दिनों में ऐसा तो कुछ सुना रहेगा दैट जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी ऐसे अलग अलग टैक्सेस के नाम आपने सुने रहेंगे. नाउ व्हाट ऑल दीज टैक्सेस आर, व्हेन डू दे कम इनटू पिक्चर? लेट मी फर्स्ट टेल यू दैट एक तो ये सप्लाई के दो टाइप्स, एक है मैं बोलता हूँ कि इंटर स्टेट सप्लाई, दूसरा है इंट्रा स्टेट सप्लाई. व्हेन आई एम गोइंग टू से देयर इज अ इंटर स्टेट सप्लाई, if the location of supplier, now please mark my words very clearly, if the location of supplier and the place of supply, if the location of supplier and place of supply happen to fall in two different states or union territory, or one state or union territory, we'll say that there is a interstate supply. So let's take an example. Location of supplier is in Mumbai, Maharashtra. Place of supply of goods is in Gujarat, Ahmedabad. In this case, what is going to happen, that the location of supplier was Mumbai, the place of supply where the goods were sent, that is in Gujarat. So this supply becomes a interstate supply. I am not merely seeing seller and buyer's perspective. I am seeing location. I want to talk about these words very clearly. Location of supplier and place of supply, because these two have a lot of significance in them. Place of supply, ये IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई का अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है. प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में प्रोविजंस ये IGST एक्ट में दिए गए हैं कि कौन से ट्रांजैक्शंस में कौन सी चीज को कौन सी जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, किस नेचर के सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा. ये सब प्रोविजंस जो है ये IGST एक्ट में कवर होते हैं. हम लोग अभी ब्रॉड बेसिस पे जब बात करते हैं तब इतना ही बोलेंगे कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये अगर दो अलग स्टेट्स में है, या फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर एक यूनियन टेरिटरी में एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दूसरे स्टेट में है एंड वाइस वर्सा, देन वील से देयर इज अ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. एंड व्हाट अबाउट द इंट्रा स्टेट सप्लाई? सो व्हेन देयर विल बी अ केस ऑफ when there will be a case of location of supplier and place of supply being under the same state, we'll say that the supply is called as a intra-state supply. That is going to be considered as a intra-state supply. Now friends, please remember that when I am referring to the provisions of section 10, 11, 12, 13 of the IGST Act, I am being very particular that ये IGST Act के जो provisions है हम later on अपने कुछ lectures में cover करेंगे कि जहाँ पे आपको specifically कुछ सप्लाईज के केस में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है ये बताया गया है, जहाँ पे वो प्रोविजंस हमको समझने जरूरी है. सो बेसिक, इफ देयर इज अ इंटर स्टेट सप्लाई नाउ, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर विल बी अ जीएसटी चार्ज. व्हिच जीएसटी इज गोइंग टू बी इम्पोज्ड इन दैट केस? देयर विल बी अ आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जो भी रेट शेड्यूल्स इशू किए गए हैं 5%, 12%, 18%, 28%, ये जब रेट ऑफ टैक्स के बारे में बात की जाती है, सो इफ इट इज अ आईजीएसटी इंटरस्टेट सेल इंटरस्टेट सप्लाई की वजह से अगर आईजीएसटी लेवी होता है तो वो उस 5, 12, 18 या 28% के हिसाब से इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा. इंट्रा स्टेट सप्लाईज के केस में द टैक्स टू बी लेविड विल बी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. So if the rate of tax assigned for that supply is let's say 12%, then it will be 6% CGST and 6% SGST. यही अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर होता है तो इट विल बी सीजीएसटी एंड द यूटीजीएसटी, बिकॉज ओनली दैट स्टेट वाला कंपोनेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय द यूनियन टेरिटरी. सो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी बस इतना ही डिफरेंस रहेगा उसमें, देयर विल बी नथिंग एल्स. सो इफ इट इज अबाउट अ यूनियन टेरिटरी, लेट्स से दीव दमन में कोई सप्लाई होता है, मतलब विद इन दीव दमन कोई सप्लाई हुआ तो इट्स अ इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसको हम लोग इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई बोल सकते हैं. तो देयर विल बी अ सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी इंस्टेड ऑफ सेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. नाउ सर्विसेज के बारे में जहां तक बात आती है, देन अगेन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या है, लोकेशन ऑफ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस क्या है, ये चीज जानना जरूरी है. सी देयर आर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, लाइक लेट्स से अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दिल्ली is providing a services to a chartered, it's providing to a client who is located in let's say Kolkata. So Delhi का CA कोलकाता वाले को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. लेट्स से दिल्ली वाला पर्सन डज नॉट इवन ट्रैवल टू कोलकाता, ही गिव्स अ ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल, नथिंग एल्स ही गिव्स, बट वो एक इनवॉइस रेज करता है. फिर भी आज की तारीख में क्या हुआ है, दैट लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो है ये आउटसाइड द स्टेट है, लोकेशन ऑफ प्रोवाइडर जो है ये एक स्टेट में है. So location of supplier is in Delhi, the place of supply becomes the location of recipient which is in Kolkata, so it becomes a interstate supply liable for IGST, Integrated Goods and Service Tax.
आइदर किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर इंटर स्टेट है तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, वही ट्रांजैक्शन अगर लेट्स से विद इन द स्टेट होता है तो उसके ऊपर लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सो रिमेंबर देयर विल बी नेवर अ सिचुएशन कि सिर्फ सीजीएसटी चार्ज हुआ है बट एसजीएसटी नहीं है, या वाइस वर्सा सिर्फ एसजीएसटी हुआ है पर सीजीएसटी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इफ देयर इज अ आईजीएसटी देन इट इज अ इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है देन इट इज इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन। सो काइंडली रिमेंबर दिस वेरी क्लियर। अब क्रेडिट्स की बात आती है कि हम लोग जब बात कर रहे थे कि सीमलेस क्रेडिट, इज इट रियली अ सीमलेस क्रेडिट? सी आई टेल यू, यस देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कोर्स। IGST paid on inputs will be allowed to pay IGST on output, then उसके बाद CGST on output and third SGST on output. This has to be in a sequence. IGST का input tax credit से पहले मुझे पूरा IGST का output tax liability pay off कर देना। अगर मेरा output IGST का liability exhaust हो जाता है then I can pay CGST on output, अगर वो भी liability exhaust हो जाता है then I am going to pay SGST on output। ये सीक्वेंस फॉलो करना इसेंशियल है, तो द आंसर इज यस। सो IGST पेड ऑन इनपुट मतलब मैंने अगर बाहर के स्टेट से गुड्स खरीदे, ऐसा अज्यूम कर लो दैट आई हैव परचेज गुड्स फ्रॉम राजस्थान, आई एम इन महाराष्ट्र, सो द पर्सन ओवर देयर हैज चार्ज मी IGST, तो मेरे पास IGST का क्रेडिट आ चुका है। मैं वो गुड्स को रीसेल करता हूँ महाराष्ट्र में ही, सो ऑन माई आउटपुट आई एम गोइंग टू चार्ज CGST एंड SGST। सो लेट्स सपोज आई हैव अ IGST ऑफ 50 rupees with me, I have an output liability of CGST let's say 20 rupees and SGST let's say 20 rupees। अभी सर मैं ये 50 rupees का क्रेडिट कैसे यूज करूँ? First of all IGST has to be used against IGST। Do I have any IGST liability? Right now I don't, so there is nothing to pay as IGST। फिर मेरे पास कौन सा लाइबिलिटी है? मेरे पास 20 rupees का CGST का लाइबिलिटी है, ठीक है, ये 50 में से 20 रुपए से मैंने पहला भर दिया CGST। Then I have a SGST liability to the extent of again 20 rupees, so I have paid again 20 rupees as CGST, I mean SGST beg your pardon। फिर बचता क्या है? बस 10 रुपए का IGST का क्रेडिट है, उसका क्या करना है? कुछ नहीं, उसके आगे के क्रेडिट आगे के क्रेडिट पीरियड में उसको हम लोग एज अ क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दैट विल रिमेन विद यू एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट। CGST का क्रेडिट किसके साथ यूज कर सकते हैं? सो CGST ऑन इनपुट अगर आपके पास रहेगा तो यू कैन यूटिलाइज इट टू पे फर्स्ट CGST ऑन आउटपुट एंड IGST on output in second sequence। But CGST का क्रेडिट ये आउटपुट SGST के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। CGST paid on input can be utilized to pay first CGST, if वो liability exhaust हो जाता है तो उसके बाद आप पे करोगे IGST। If you have a CGST on input and आपके पास आउटपुट liability SGST का है then please remember ये CGST का क्रेडिट SGST भरने के लिए अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी आप यूज नहीं कर सकते। If you have a SGST का क्रेडिट, उससे आप क्या पे कर सकोगे? तो SGST on input can be utilized to pay SGST on output as well as उसके बाद सीक्वेंस में आएगा IGST on output, but SGST on input से मैं CGST on output पे नहीं कर सकूंगा। So dear friend, what happens is कहीं ना कहीं पे कुछ ट्रांजैक्शंस में जब हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे दैट टाइम आपको ये ध्यान में आएगा कि ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रेशंस के लिमिटेशन के वजह से मुझे कहीं चीजों का, कहीं मैंने और किसी स्टेट में इनकर किए गए एक्सपेंडिचर्स का क्रेडिट मैं अपने स्टेट में नहीं ले पा रहा हूँ। सो सीमलेस क्रेडिट है, इट्स एज अ प्रिंसिपल इफ यू आस्क मी देन यस सीमलेस क्रेडिट जीएसटी के अंदर है, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ इट्स ओन टू इट एज वेल। रजिस्ट्रेशन इज अ वेरी वंडरफुल क्राइटेरिया इन जीएसटी। The basic requirement is that if your turnover is more than 20 lakhs in a financial year, you are liable to get registered under GST। टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर बोलता है। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स द टैक्सेबल टर्नओवर, द एग्जम्प्ट टर्नओवर, द जीरो रेटेड सप्लाईज, एवरीथिंग। मतलब अगर ऐसा हो कि आप टैक्सेबल टर्नओवर आपका है लेट्स से 4 लाख रुपए का एंड एग्जम्प्ट टर्नओवर है आपका 17 लाख रुपए का, what is about your aggregate turnover is happening is your aggregate turnover because of exempt plus taxable अगर मैं मिलाता हूँ तो वो तो 20 लाख रुपए क्रॉस होता है and therefore I am liable to get registered। See of course please remember they are only saying that you are liable to get registered, that does not mean कि exempt supply के ऊपर जाके टैक्स भरो, ऐसा नहीं। टैक्स तो आप टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर ही भरोगे, आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, दैट इज व्हाट इज ओनली कंसिडर्ड। ये जो टर्नओवर के कंसिडरेशन है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अ सेम पैन PAN दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर। सो अक्रॉस द कंट्री
आपके पास ये पैन में अगर आपके पास मल्टीपल एंटिटीज है तो एग्रीगेट टर्नओवर पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करते वक्त मुझे उस पैन के बेसिस पे पूरी कंट्री में जितना भी टर्नओवर है मुझे वो सब कंसिडर करना है। मतलब लेट्स से दैट मेरा एक प्रोप्राइटरी फर्म है, महाराष्ट्र में है, मेरा एक प्रोप्राइटरी मतलब मेरा ही प्रोप्राइटर हैज अनदर फर्म इन गुजरात। सो इन दिस केस व्हेन आई एम गोइंग टू कंसिडर द टर्नओवर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि गुजरात कोई और बंदे की फर्म है एंड मेरी कोई और बंदे की फर्म है तो मैं टर्नओवर एक साथ नहीं करूंगा। पैन नंबर तो सेम ही है, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर इज सेम। सो इस परमानेंट अकाउंट नंबर में मेरे पूरे कंट्री में जितना भी मेरा टर्नओवर हुआ है दैट विल बी पुट टुगेदर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन माय एग्रीगेट टर्नओवर। नाउ the next important and interesting concept in GST. A person will be liable to register in each state from where he makes a supply, from where he makes a taxable supply. If the turnover exceeds 20 lakhs, means what happens, understand. अभी जैसे मैंने आपको मेरी प्रोप्राइटरी फर्म के बारे में जिक्र किया, लेट्स से दैट मेरा गुजरात में बिजनेस बहुत नया है, हार्डली 2 लाख रुपीस का मेरा टर्नओवर है उधर से, बट मेरा महाराष्ट्र में टैक्सेबल टर्नओवर है 25 लाख रुपए का। So I am anyways registered in Maharashtra. Now because I am registered in Maharashtra, I will be considered as a registered person for the purpose of GST as registered person in Maharashtra. But गुजरात में से भी मैं टैक्सेबल सप्लाईज तो करता हूँ ना। भी हम लोग ऐसा नहीं देखेंगे कि हर स्टेट में 20-20 लाख का टर्नओवर है तो उधर आप रजिस्ट्रेशन लो। जीएसटी में ये स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिमेंबर इन सर्विस टैक्स you would have taken only one registration and you could be doing business from anywhere in the country. Correct? ऐसा कुछ नहीं था। There was a provision of centralized registration if you remember. सर्विस टैक्स में अपने पास centralized registration का भी प्रोविजन था कि पूरे देश के लिए आप एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेते तो भी टेंशन नहीं था। Now the concept has changed. The registration has to be obtained in every state from where you are going to make a taxable supply if your turnover has exceeded the specified limits. So, अगर ऐसा हुआ तो मुझे गुजरात में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी मतलब मेरा ही प्रोप्राइटरी फर्म, मतलब लेट्स से ओमकार गाडगिल एज अ फर्म रजिस्टर्ड इन गुजरात एंड ओमकार गाडगिल एज अ फर्म रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन्स फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब मेरा ही फर्म गुजरात में ये अलग पर्सन है, मेरा ही फर्म महाराष्ट्र में अलग पर्सन है, विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन इवन दो वी हैव अ सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। नाउ दिस इज सम डिफरेंट कंसेप्ट। आपको याद है स्टॉक ट्रांसफर करके एक कंसेप्ट होता था जहां पे आप एक स्टेट से अपने ही दूसरे स्टेट के यूनिट को बिना टैक्स भरे स्टॉक भेज सकते थे एंड देन देयर वाज अ रिटेंशन ऑफ टैक्स टू दैट एक्सटेंट। Stock transfer as a concept across the state will not continue anymore in GST. That will be treated as a supply from one person to another person. Even though मेरा ही खुद का यूनिट गुजरात स्टेट में है, since there is a interstate supply, that will be treated as a supply between two distinct persons because गुजरात वाला मैं एंड महाराष्ट्र वाला मैं, हम क्या है, हम डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो हमने एक दूसरे को अगर गुड्स भेजा तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई, देयर इज नथिंग एज स्टॉक ट्रांसफर। What if I have two units in the same state? Then उसमें अगर गुड्स भेजा तो भी स्टॉक ट्रांसफर नहीं तो भी सप्लाई होगा क्या? तो द आंसर इज नो। हर एक स्टेट में अगर लेट्स से महाराष्ट्र में मेरा मुंबई में एक यूनिट है, मेरा पुणे में एक यूनिट है, तो मुंबई से यूनिट में अगर मैंने पुणे को भेजा तो पुणे हैज टू बी रजिस्टर्ड एज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन माय रजिस्ट्रेशन, देन इन दैट मूवमेंट देयर विल बी नो सप्लाई। मतलब विद इन द स्टेट अगर मैंने एक रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस से दूसरे रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस में गुड्स भेजे, in that case there will be no supply. But please remember, if this happens outside the state, even though it is happening to my own firm over there, it will be considered as a supply by two distinct persons. So friends, ये कुछ खास transactions है जिसको हम लोग को differently देखने को मिलेगा under the GST purview. That is what we can say in this case. Now if I talk about a bit of reverse charge mechanism. Reverse charge mechanism, if you remember, वन केस वॉज देयर अंडर एक्साइज कि मोलासिस प्रोक्योर करने वाले को एक्साइज पे करना पड़ता था अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड अंडर द सर्विस टैक्स वी हैड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आल्सो इन द नेचर ऑफ पार्शियल रिवर्स चार्ज एंड फुल रिवर्स चार्ज. Reverse charge mechanism is going to hit very hard in GST. Now remember and understand why. एक तो स्टैंडर्ड 12 सर्विसेज उन्होंने डिफाइन किए कि जिसमें रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा ही. 12 services have been defined. In that case, let's say that importation of services from a person outside India, sponsorship services, goods transport agencies,
प्रोफेशनल सर्विसेज बाय वे ऑफ अ लॉयर, आई मीन बाय अ लॉयर, मतलब लीगल सर्विसेज, ये सब सर्विसेज कंपलसरी रिवर्स चार्ज में। मतलब क्या, द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज नॉट गोइंग टू कलेक्ट एंड पे द टैक्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू बी ऑन द रेसिपिएंट ऑफ दिस सप्लाई। तो और क्या रिवर्स चार्ज में नया है, अब सुनो। The best part of GST is covering as many transactions possibly under the ambit of GST. Section 9 subsection 4 of the CGST Act says any supply or any taxable supply of goods or services by an unregistered dealer to a registered dealer will be liable to be taxed in the hands of recipient. Understand what? Any taxable supply of goods or services by an unregistered dealer to a registered dealer will be liable to be taxed in the hands of recipient, and the recipient shall be one who is paying tax on these supplies. Means, understand, supplier of goods, मतलब let's say that मेरे ऑफिस के नीचे चाय वाला है, अभी सप्लाई ऑफ चाय मतलब इट्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ फूड, सो इट इज टैक्सेबल। चाय वाला बंदे का टर्नओवर लेट्स से 15 लाख रुपए, तो वो तो रजिस्ट्रेशन लेने से रहा। चाय वाले से मैंने चाय लिया एंड मेरे पूरे महीने का बिल होता है मान लो 8,000 रुपये ना, 8,000 रुपीज मेरे पूरे मंथ का बिल है, तो व्हेन आई एम गोइंग टू मेक अ पेमेंट टू हिम इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई बाय हिम टू मी फर्स्ट। ये सप्लाई किसने किसको किया है, अनरजिस्टर्ड डीलर ने रजिस्टर्ड डीलर को किया। मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं बिकॉज आई हैव ऑब्टेन्ड अ रजिस्ट्रेशन, चाय वाला हैज नॉट ऑब्टेन्ड अ रजिस्ट्रेशन, सो ही इज अ यूआरडी, अनरजिस्टर्ड डीलर। एक्सक्यूज, अनरजिस्टर्ड डीलर ने अगर रजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई किया जो टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई है, देन रजिस्टर्ड डीलर विल बी द वन हु विल बी पेइंग टैक्स ऑन दैट। डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, ये प्रोविजन को थोड़ा बहुत लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। It does not mean that any supply, it only says section 9 subsection 4 very clearly says taxable supplies of goods and services, मतलब जो goods and services का supply otherwise taxable है, अगर एक अनरजिस्टर्ड डीलर रजिस्टर्ड डीलर को करेगा, only in that case it is going to be liable for tax. Only in that case it is going to be liable for tax to be paid under the reverse charge mechanism. Dear friends, ये चीज के आने के वजह से बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो आज तक कभी भी टैक्सेबिलिटी में नहीं आ रहे थे, बिकॉज of the providers turnover limits and anything, and there were so many limitations. Now because of these things, what is going to happen, that this reverse charge mechanism is going to open up a lot of window for collection of tax. Please also note that अगर रेसिपिएंट के ऊपर हम लोग ने जिम्मेदारी ली है कि तू टैक्स रिवर्स चार्ज में पे करेगा, then at the same time he will be also allowed to take the input tax credit of the tax so paid. The only thing is that whenever, as you know, that whenever reverse charge में tax pay किया जाएगा, you cannot pay it using the balance in SENVAT, I mean, no, balance in your input tax credit accounts. You have to first pay it in cash, and thereafter you will be able to take the credits of it. There is a lot of scope in GST for the finance professional. Please trust me. You are going to be in a totally new era of GST. Learning experience बहुत ही अच्छा है. So far I have been fortunate enough to work in industry to have gathered quite a experience in various types of industries, you can say. The law is totally new, so there are interpretational issues, there are interpretational conflicts, there are lot many things which are differently understood, but ultimately the law is going to settle. I wish you a happy learning. I'll be coming up with very frequently with few more videos for specification, like I told you about place of supply, like I told you about the technical definitions. And for your any doubts and any kind of difficulties in GST, kindly you can send me the email. My email ID is aumkargadgil@gmail.com. It's spelled as aumkargadgil@gmail.com. My phone number is 8007976830. I would request you that you can ping me on my phone only if it is very necessary and urgent as a doubt. Otherwise, email would be highly appreciated. My YouTube channel is there, and you will be following. If you will be following, you'll be getting few more videos anyways in the course to come. Maybe around next 2 months time मैं आपको और काफी videos में देता रहूँगा. So till then, I would like to sign off from now. Thank you so much. Bye bye.